Hello students, today I am here with chemistry session for class 10th. As you know, in the last class I have discussed some chemical property such as how metal react with oxygen. So you have seen that most of the metals react with oxygen and form metal oxide, and you can recall what is the nature of metal oxide. Metal oxides are basic in nature. Okay. So let us see some metal oxides like sodium oxide, potassium oxide. These metals are soluble in water. They get dissolved in water, and so they form sodium hydroxide and likewise potassium hydroxide. Okay. In this way you can see these metal oxides are soluble in water and they form metal hydroxide. So such metal oxide which are soluble in water, they are called alkali. Okay. So what are alkalis? Those metal oxides which are soluble in water, they are called alkali. So alkalis means those metal oxides which are soluble in water are called alkalis. Because all metal oxides are not soluble in water. Most of the metal oxides are not soluble in water, but some metal oxides get dissolved in water. So such metal oxides are called alkalis. क्योंकि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर क्या है? बेसिक नेचर है, और मोस्ट मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड वाटर में सलेबल है, मीन्स वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम एल्कलीज कहते हैं. ठीक है. इट मीन्स ऑल एल्कलीज आर नॉट, ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज, यानी सभी बेस जो है वो एल्कली नहीं हो सकते हैं, बट ऑल एल्कलीज आर बेसेस. मीन्स जो एल्कली है वो बेस है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे बेस जो है वो एल्कली हों. ठीक है. और अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे मेटल्स की, कि हाउ मेटल रिएक्ट विद वाटर. सो reaction of metal with water. There are some metals like sodium, potassium. When these metals react with water, they form
metal hydroxide, that is NaOH, and release hydrogen gas. And potassium, it form KOH plus hydrogen gas. Okay. Actually, first of all, when metal react with water, it forms metal oxide. Metal plus water, it forms metal oxide, and when metal oxide get dissolved in water, metal oxide plus hydrogen, and when metal oxide get dissolved in water, it forms metal hydroxide. ओके तो पहले कोई भी मेटल जो एक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, तो मेटल जब वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बट ये मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो ये क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि सोडियम प्लस वाटर इट फॉर्म्स metal hydroxide and hydrogen gas is released. Okay, you can balance it, multiply it by 2 and multiply it by 2. Now the reaction is balanced. So one more metal is calcium. It also react with water and forms metal hydroxide plus hydrogen gas. So these two metals, sodium and potassium, these two metals are highly reactive metal. So these produce hydrogen gas vigorously and suddenly catch fire, while calcium also react with water and forms hydrogen gas. Okay, so these metals react with cold water. But there are some metals like magnesium that does not react with cold water. Magnesium, it react with hot water and it forms magnesium hydroxide plus hydrogen gas. Okay, so magnesium metal react with hot water, and there are some metals which do not react with cold water or hot water, they only react with steam. So let us see. Some metals like aluminium, iron, these metals react only with steam. So when steam is passed over these metals, it forms
Al2O3 plus hydrogen gas. It forms Fe3O4 plus hydrogen gas. So in these two reactions, you can already balance these reactions, you know very well. So after noting it, you can balance that. You can see when metal react with steam, we have written formula H2O because steam is gaseous state of water. So when these metals react with steam, they form metal oxide, you can see here, and release hydrogen gas. Okay. And one more thing is very important, कि sodium, potassium, calcium and magnesium. Sodium, potassium, calcium, magnesium. When these metals react with water, these metals float on the surface of water. So why these metals float on the surface of water? This is because when metal react with water, hydrogen gas is released and the bubbles of hydrogen gas get stick on the surface of these metals. That's why these metals float on the surface of water. Okay? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, यानी मेटल वाटर के साथ उनकी क्या रिएक्टिविटी है. तो इसमें सोडियम और पोटेशियम, ये मेटल्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं. दे विग्रसली रिएक्ट विद वाटर और वाटर से रिएक्शन करके ये मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. क्योंकि मेटल ऑक्साइड, सोडियम और पोटेशियम का जो मेटल ऑक्साइड है वाटर में सोल्यूबल है, तो इसलिए वो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. ठीक है. उसी जगह पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो कि कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है. मैग्नीशियम हॉट वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है एंड इट ऑल्सो रिलीज हाइड्रोजन गैस. लाइकवाइज एक क्वेश्चन आता है कि वाई कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, पोटेशियम, these metals float on the surface of water. So you can very easily answer it कि जब ये मेटल वाटर से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस के बबल मेटल सरफेस पर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता रहता है. ठीक है. तो इन दिस वे यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि वाई कैल्शियम और मैग्नीशियम, कोई भी मेटल से क्वेश्चन आ सकता है कि वाई कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. सो यू कैन वेरी इजली आंसर इट. और एल्यूमिनियम और आयरन, ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि नॉर्मली ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे और ना हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे. ये मेटल्स केवल स्टीम से रिएक्शन करते हैं और स्टीम जब पास की जाएगी तो ये सीधे क्या बना रहे हैं, मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ओके. तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आ रहा है कि वाई कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल फ्लोट ऑन द surface of water,
surface of water. So you can very easily answer this question, because when these metals react with water, hydrogen gas is released the bubbles of this gas stick on its surface. Okay, so you can answer like this. This is answer and this is question. क्योंकि मेटल जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एंड बबल्स ऑफ दिस गैस स्टिक ऑन इट्स सरफेस. ओके, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Now we have seen that when metal react with water, hydrogen gas is released. Okay, so sodium, potassium, they vigorously react with water, cold water. So these metals are highly reactive metal, and magnesium, it react with hot water, so it is less reactive. Aluminium, iron, these metals react with steam, so these metals are comparatively less reactive. And but there are some metals like lead, copper, gold, silver. These metals do not react with water. Okay, so these metals are very low reactive because these metals do not react with cold water, hot water or steam. Okay, and now I will discuss one or two important question. Now let us see why it is very important, why sodium and potassium kept immersed in kerosene oil. This is very important question. Why sodium, potassium metals kept immersed in kerosene oil? The solution is because these metals are very reactive metal,
So, when they are kept in open, they suddenly catch fire, and that is why to prevent accidental fire, these metals kept immersed in kerosene oil. Okay? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम मेटल्स को केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि अगर ये मेटल्स को ओपन में रखा जाए तो ये मेटल ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं एंड सडनली कैच फायर। तो इसलिए एक्सीडेंटल फायर को प्रिवेंट करने के लिए दे आर ऑलवेज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ओके, सो सोडियम potassium metals are highly reactive, so when these metals kept in open, suddenly catch fire. Okay, that's why to prevent accidental fire, these metals kept immersed in kerosene oil. Okay. Now let us see how metals react with dilute acid. Most of the metal react with dilute acid and they form salt and hydrogen gas is released. So, reaction of metal with acid. There are some metals, most common thing is metal when react with acid, then it forms salt plus hydrogen. Okay. So, let us see some reactions of metal with acid like aluminium, zinc, magnesium, iron. So, let us see how these metals react with dilute acid, that is hydrochloric acid. When aluminium react with hydrochloric acid, it forms AlCl3 plus hydrogen. Zinc, it forms zinc chloride ZnCl2 plus H2. When magnesium react with hydrochloric acid, it forms MgCl2
plus H2, and when iron react with hydrochloric acid dilute, it forms FeCl3 plus H2. Okay. So, you can see when these metals react with dilute hydrochloric acid, these metals form salt and hydrogen gas. Okay. In all cases, hydrogen gas is released. ओके तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब कोई मेटल, एक्टिव मेटल जैसे कि एल्युमिनियम, जिंक, मैंगनीज, आयरन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो ये सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, लेकिन जब कोई मेटल मैंगनीज नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो मोस्टली जो मेटल हैं व्हेन दे रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज नॉट रिलीज्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई हाइड्रोजन गैस is not evolved when metal reacts with nitric acid. This is question. Actually, nitric acid is a strong oxidizing agent. Do you know the formula of nitric acid? It is HNO3. This is nitric acid. This is a strong oxidizing agent. Okay, it is a strong oxidizing agent. So, it oxidizes hydrogen into water. क्योंकि आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो जाता है और दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पर HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन इनटू वाटर एंड इटसेल्फ get reduced into any of its nitrogen oxide. So, hydrogen gas is not released. Now, you can take a screenshot of it. After this, I will write the solution for this question. Now, you can see these reactions are not balanced, as you have already studied how to balance chemical equation. So, I hope you can balance it, and you can see now here is three chlorine and here is 1 chlorine.
Okay, here is 2 hydrogen. So if we multiply it by, suppose if we multiply it by 3 to balance chlorine, then hydrogen is 3 here and here is 2. So multiply it by 3 and multiply it by 2. Okay, actually AlCl3, there are 3 chlorine atom and there is only 1 chlorine atom. So if you want to balance chlorine, then you will multiply it by 3. So 3Cl, but hydrogen becomes 3 atom and here is only 2. So multiply it by 3, 3 2s are 6. So multiply this whole set by 2. So it will become 6HCl. Okay, and multiply it by 2. Okay, so you can write this reaction again separately. 2Al plus 6HCl, it gives twice AlCl3 plus 3H2. Okay, because every time the chemical equation should be balanced. You can see this ZnCl2, or you can see hydrogen 2 atom. So you can multiply it by 2. Now this is balanced. You can see this hydrogen 2, multiply it by 2, it is balanced now. In this case Cl3 and here Cl1. So multiply it by 3, then hydrogen becomes 3. So multiply it by 3. So 3 2s are 6 hydrogen. So multiply it again by 2, and in this way hydrogen and chlorine both atoms get balance. Multiply it by 2 also. So you can see 2 3s are 6 chlorine, 3 2s are 6 hydrogen, and here 2 Fe. So multiply it by 2. You can write this reaction again. 2 Fe plus 6 HCl, it gives 2 FeCl3 plus 3 H2. Actually this is iron third chloride. Okay. So what was the question before it? Why hydrogen gas is not released when metal react with nitric acid? So solution for that question: nitric acid is a strong oxidizing agent, so it oxidizes hydrogen gas to water and itself means nitric acid get reduced into any of its
oxide. Like N2O, NO or NO2. Okay? That's why hydrogen gas is not released. Is not released. Okay? So, in this way you can answer. When actually nitric acid is a strong oxidizing agent, so it oxidizes hydrogen to water, hydrogen gas to water, and itself get reduced into any of its nitrogen oxide. Okay? That is why hydrogen gas is not released when metal react with nitric acid. Okay? So, now today's class is over, and we will discuss some other chemical properties in the next class. Thank you, students.